Hello students, today I am going to teach you the chapter Poets and Pancakes by Asoka Mitran. The first important thing in the chapter is the Gemini Studio, and the owner of Gemini Studio was Mr. S.S. Vasan. Okay, and pancake was the makeup material used by the Gemini Studio. These things you need to remember. The second important thing in this chapter is the office boy. The office boy was a grown-up man in the makeup department of the Gemini Studio. He was in charge of the crowd makeup. This, I think you all know, he was in charge of the crowd makeup, and he applied pancakes on their faces with the help of a dipped paint brush. Though his job was quite an easy one, the office boy considered himself to be a very skilled person. The third important character in this chapter is Asoka Mitran. Asoka Mitran was one of the staff whose job was to collect information such as news events from newspaper and magazines and to paste them in files. The other staff considered his job out of place, and most of them thought so high of themselves. Here are some of the interesting staffs of Gemini Studio. The first one is Kotha Mangalam Subbu. Kotha Mangalam Subbu was another clerk. He was not as educated, as fortunate as and supported by the office boy, yet he reached the top of the Gemini Studio. And the third important character in the story is your legal advisor. लीगल एडवाइज़र से आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं. लीगल एडवाइज़र जो था वो लीगल एडवाइज़र के नाम पे जस्ट ऑपोजिट क्यों था, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी. The legal advisor, he worked in the story department. This is very clear. He was a lawyer and provided legal advice to the writers. Yet he was known as the illegal advisor. Why? Because the following incident is one reason that gave him that name. So once during a shooting, जब एक बार वो shooting चल रही थी, तो बहुत ही एक न्यू एक्ट्रेस जो थी वो सेट पर उन्होंने वो लेडी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, और उसके बाद आपके लीगल एडवाइज़र ने क्या किया था, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, और जैसे ही आपकी जो एक्ट्रेस थी उन्होंने अपना गुस्सा वहाँ पर बंद किया तो लीगल एडवाइज़र ने पूरी तरीके से वो रिकॉर्डिंग दोबारा से चला दी, और इस वजह से एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस का जो करियर था वो एंड हो गया. So once the shooting was under progress, the heroine, a highly emotional girl, and she got angry with the director and producer. So while the whole set stood stunned at this, the legal advisor, he recorded her voice without her permission and made her listen to the playback, thus resulting the end of a rising actress. Another important characters are your poets and the writers in the Gemini Studio. So Gemini Studio had some great poets like Hridaynath Chattopadhyay and a few others. Most of the insignificant poets considered so great of themselves. They had no great talent, yet there was most creativity in them. अब जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कम्युनिज्म एंड एमआरए के बारे में. तो एमआरए क्या था हमारा, मोरल रीआर्ममेंट आर्मी, और कम्युनिज्म जो होता है वो होता है आपका साम्यवाद. तो आपके जो कम्युनिज्म वाज द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर दैट वाज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द होल वर्ल्ड. एंड उस टाइम पे जो हमारे पोइट्स एंड राइटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बाहरी लोगों को इनवाइट करने में विश्वास रखते थे, और जब बाहर के लोग यहाँ पर आके अपने अपने प्रोग्राम सेटअप करते थे तो हमारे जो इंडियंस थे, जो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ थे, वो उनकी हॉस्पिटैलिटी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते थे. और जेमिनी स्टूडियो में ही दो आपके इम्पॉर्टेंट जो प्ले हुए वो यहीं पर हुए थे. एक था आपका जोथम वैली, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपके स्टीफन स्पेंडर का विज़िट जो जेमिनी स्टूडियो में था वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री था एक, और फाइनली जाके आपके जो राइटर हैं उन्होंने फाइनली जाके उनकी इस मिस्ट्री को सॉल्व किया. और अशोका मित्रन का जब मीटिंग व्हेन ही वाज मेट विद स्टीफन स्पेंडर, द लेसन एंड्स विद टू इंसिडेंट in which Asoka Mitran, our author, he met Stephen Spender not face to face, but he came to know about him in the Encounter magazine. So this is all about the chapter,
and I will be dropping in my description box the whole summary of this chapter. Students, this was just the summary of Poets and Pancakes, and in my next video we'll be discussing about the very important questions from this chapter.